Now listen very carefully to this next conversation that's coming up, because India Today also spoke to former Congress corporator and local in that mohalla, Baba Bauidin, who allegedly instigated one of those mobs against Saad Ansari a day before he was assaulted and harassed. Baba Bauidin is still firm that Saad should not have backed Nupur Sharma. He has no remorse for what happened to young Saad, and even his apology cannot be accepted, says this man, just because of threats coming from people like the one you're about to hear. Congress former corporator Saad has been sent to an undisclosed location, into hiding. 19-year-old engineering student on the threshold of his career, sent into hiding for a Facebook post. His fight for liberty continues because of people like the man you're about to hear. We put questions to him. आप एक जनप्रतिनिधि हैं, किसने आपको यह हक दिया कि एक 19 साल के लड़के के आगे, जिसने सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट रखी थी, उसके घर के आगे आप ये बखेड़ा खड़ा कर दें? फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये होता ही नहीं है कि मैं आपके रिलीजन के बारे में कुछ बोलूं और आप मेरे रिलीजन के बारे में कुछ बोले। उन्होंने तो सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखी थी जिसे गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया गया। क्या आप इस तर्क को नहीं मानते हैं? अगर ये तर्क सही होता तो उसकी पहले ही दिन जमानत हो जाती, तो फिर उसको 19 दिन या 17 दिन क्यों लग गए जामीन के लिए? तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलती हुई है उससे। ये वीडियो कब का है? बताइए थोड़ा मुझे खुलासा करिए। आप जो उसके घर पे जाके उसको जो भी किया गया, उसके साथ गाली गलौज की गई, उसको मारा गया, वो वीडियो अर्ली मॉर्निंग 3 बजे का है। ये जो वीडियो आप देख रहे हो वो दोपहर में 2 बजे का उसके घर के नीचे का है, उसके घर के ऊपर का नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप उसके घर में गए नहीं थे, क्राउड के साथ थे ही नहीं? ये क्राउड और वो क्राउड में बहुत फर्क है। आप घर के नीचे जरूर गए? नीचे जरूर, क्राउड के साथ जरूर गए थे। इंटिमिडेट आपने जरूर किया था। ठीक है, इंटिमिडेट आप नहीं बोल सकते उसको, इसलिए नहीं बोल सकते। मैं बता सर, अगर आप इतने बड़े क्राउड के साथ जाते हैं, 19 साल का वो लड़का है, वो कोई हार्डकोर क्रिमिनल तो है नहीं, उसके घर के नीचे जाके जो तमाशा खड़ा कर दिया, आपको ये नहीं लगा कि आपको अपना पक्ष रखना चाहिए? आपने लड़की को समझाना चाहिए था, उसके घर वाले सामने थे, लेकिन आपने तो उसके सामने एक ऐसी तस्वीर बना दी है, शायद वो जिंदगी भर अब उससे निकल नहीं पाएगा। तो निकल नहीं पाएगा तो मतलब वही बात चली है ना, यहाँ पे बात यही चली है कि मतलब आप कुछ भी करोगे और फिर आप बोलोगे आई एम सॉरी। नहीं, ये फैसला कौन करेगा कि कुछ भी करो? कानून के पास गए ना, हम कहाँ गए? तो फिर जो इतनी भीड़ उसके घर के आगे इकट्ठी हुई, जो सबने देखी, उसे क्या माना जाए? माना यही जाए ना कि मतलब अगर आप इस चीज की हरकत करोगे तो मत करो, प्लीज मत करो। हम तो कानून के पास ही गए, हमने तो एफआईआर की, हमने और क्या किया? अगर हम उसको मारते, हम उसको नीचे लाते, हम उसको मारा तो है, वो विजुअल्स दिखते हैं। जिसने मारा है उसमें हम नहीं है। हम क्या, मेरा पूरा एरिया नहीं है। मेरे एरिया क्या, मेरा पूरा वार्ड नहीं है। कौन थे ये लोग? मुझे नहीं पता कौन थे वो लोग। Pankaj Upadhyay is the reporter who went to Bhiwandi, who got us that update, got clarity. Imagine, Pankaj, you know, the day before we reported is when, after 16 days in jail, young Saad Ansari finally got bail on June the 27th. But that is how quiet the family wanted to keep it, and we respect their wishes. Even the lawyer, they wanted to keep it quiet because of the threat to him from people like Baba Bauidin. There was obviously a threat to this young man in his mohalla, and that's the reason why it is so scary that the family is still fearful, and they sent him into hiding to some undisclosed location, Pankaj. Shiv, this is a very disturbing story. Today, when I went to Bhiwandi, I not only met the parents of this 19-year-old boy, I met the neighbors as well, and I met all those boys, you know, whom he used to play with a few months back. But today the scenario has completely changed. The trauma for this 19-year-old boy, Shiv, continues. The disturbing story and its follow-up continues, because so scared and traumatized are the parents that they say the boy needs to be left alone now. He's going to take a lot of time to recover. They say he is under depression and that he is being treated for depression. The neighbors who I interacted with maintain that the 19-year-old is an innocent boy and he wasn't even knowing what would have happened after he posted that particular post in favor of Nupur Sharma. They say such actions against this boy was completely unwarranted. And today, such is the scenario that the parents say that they have shifted him out of Mumbai to some undisclosed location because they fear for his life. They maintain that the mob that had gathered under their house could, you know, gather any time and could take law in their own hands. And you heard the people like former corporator of the Congress party. He is unapologetic.
He says that he places his religion before he is a people's representative. Can men understand the ground zero situation? And Yes. therefore I say the trauma for this boy is not over as yet.